Welcome back, guys. So, this is our third video, and this is about the miscellaneous questions. So, starting off with Right. miscellaneous questions. So, the first question is that about Satyajit Ray. So, when Right. we talk about Satyajit Ray, we always know that he has always targeted issues like class division, then women empowerment, then what we call the Right. cultural deviation, and all these things. And the Right. radical development, the society's radical outlook, what I meant to say. So, agar Right. in contemporary times, if we put Satyajit Ray in 2023, yes, and keeping the current scenario in concern, what would be the issues that he would target? Um, Firstly, to give this answer, we need to first understand Satyajit Ray's psyche. Why he used to pick up those topics. Firstly, firsthand, he wouldn't have picked. I don't think wouldn't have picked any international issue because he never used to make films on things he has never lived. Barely. In one of his very famous interviews, he said that I don't want to make Hindi films because I don't understand the language. And I don't want to make a film where a Bengali script is being translated into Hindi because I am talking about a Bengali life in a Hindi language that is being dishonest to the Bengali culture and the Hindi culture altogether. Mm-hmm. So I'm not going to go in that path of dishonesty. Although he made one Hindi film, Satranj Ka Khiladi, which did not came out that good as it is expected of Ray. So I don't think he would have made anything regarding today's international crisis that we have. He would have made something related to Bengal's land, probably. To some extent, maybe India's problems, those are related to Bengal in a very homely Bengali uh, format. That is what he has always done. One thing that you have mentioned that Ray's women, I find Ray's portrayal of women extremely interesting. He always creates a women verse जहां पे वो जो दिखाना चाहते हैं there is absolutely an alter ego of a character जो वो नहीं दिखाना चाहते हैं और जैसे जैसे kinds of women he doesn't want to be a part of the society because they are lagging behind in certain things. He wants them to be powerful. So in almost every of his film you will see कि जहां पे he is bringing out a women centric mindset, he is putting an alter ego of the woman in another character जो उससे बिल्कुल उल्टा है, बिल्कुल weak है, and then the portrayal of his main protagonist, female protagonist, that gets hyped. Mm-hmm. So मुझे आज भी लगता है कि रे इज वेरी फॉन्ड ऑफ टेकिंग सब्जेक्ट्स ऑफ ऑपरेशन, बहुत ही ज्यादा करते थे वो. एनी फॉर्म ऑफ ऑपरेशन, क्लास डिविजन, डिस्क्रिमिनेशन, इस तरीके के काम. आई गेस इन today's scenario he maybe would have gone with the male oppression that is coming up, like the places where men are dominated. That is, और ये सच है. Definitely, that like yeah, like And I'll continue that. You know, कोई भी फंडामेंटलिज्म, कोई भी तरीके का फंडामेंटलिज्म को उसके विरुद्ध अगर आपको जाना है, यू वांट टू गो अगेंस्ट इट एंड यू वॉइस योर कंसर्न्स अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ फंडामेंटलिज्म. मान लीजिए अगर हम लोग पैट्रियार्की के विरुद्ध बात करना चाहते हैं, उस टाइम पे व्हेन women, not only women, men started talking first. So men started talking and then women joined the force and it became a feminist bloc. Ki when they started voicing against patriarchy, it was amazing. It was amazing to look at. It was amazing to live in a world जहां पे इस तरीके का फंडामेंटलिज्म के विरुद्ध बातें हो रही है, मोर्चा निकल रहा है, things are coming on track.
women are getting jobs, getting equal pays, equal opportunities. फिर दिक्कत फंडामेंटलिज्म के विरुद्ध जाने का क्या होता है ना, जो मोशन फंडामेंटलिज्म के अगेंस्ट जाता है वो खुद एक फंडामेंटलिज्म बन जाता है। और ये फेमिनिज्म और पैट्रियार्की के लिए नहीं है, कोई भी सिचुएशन के लिए है, कोई भी। तुम भाषा को लेके अगर बात करना चाहो, कोई भी लैंग्वेज का, कि हमारे इस स्टेट का मदर टंग ये है, बाहर वाला ज्यादा क्यों बोलेगा अपने भाषा में, मातृभाषा में, व्हाई इज नॉट दैट पर्सन लर्निंग दिस लैंग्वेज। ये ऑलमोस्ट बहुत सारे स्टेट्स में हुआ है जहां पे हिंदी इज नॉट अ लैंग्वेज। तो दिक्कत क्या होता है, दीज स्टार्ट्स ऑफ विद एन अमेजिंग वाइब एंड एनर्जी, कि सच में हमारे मेरे भूमि के जो बच्चे हैं, why are not they getting the first hand opportunities, and बाहर से लोग आके they are taking them all. You cannot do that. You cannot, मतलब ये करना नहीं चाहिए, it's ethically wrong. तो लीगली तो कुछ बोल नहीं सकते, इसके अगेंस्ट भी लॉ है नहीं। तो दिक्कत क्या हो जाता है, when these groups start someone who speaks another language that is not of their land and holds them and says talk in this language right now, talk in this language, how dare you stay in this land without knowing this language. तो देखो क्या हो रहा है, you are voicing against an oppression, you are voicing against a fundamentalism or against a movement that is getting very toxic, and you are yourself becoming toxic. और ये हो क्यों रहा है, एग्जैक्टली हर एक मूवमेंट, कोई भी मूवमेंट तुम देखने जाओ जो बनी बनाई व्यवस्था के विरुद्ध जाता है, उसके कोड ऑफ कंडक्ट करप्शन के विरुद्ध जाता है, जो कोड ऑफ कंडक्ट करप्ट हो रहा है उसके विरुद्ध जाता है, दैट इज बिकॉज ऑफ देयर पर्सनल पॉलिटिकल गेन। उनको भी पता है कि हम लोग 2-4 साल इसके अगेंस्ट बात करेंगे एंड देन वी विल स्टार्ट वॉइसिंग इट टू हैव पब्लिक वोट्स। तो ये कोई भी फंडामेंटलिज्म को रोकने का जो तरीका है ना, ये अल्टीमेटली एंड होता है वोट बैंक में जाके, अपने पर्सनल फायदे में जाके। तो ये बड़ी दिक्कत की बात है। आई थिंक रे वुड हैव डेफिनेटली गॉट समथिंग टू डू विथ मेन, probably, if I'm not very wrong. So yeah, I completely agree with the fact that Satyajit Ray would have definitely targeted the dominance that has been happening on males. Like it's basically bullying. Like Not just the dominance. The point of here is, see, the fun fact of patriarchy. Even men are oppressed by patriarchy. Patriarchy बोल ले या feminism बोल ले, they don't target a particular gender. कि patriarchy is not just against women. patriarchy जो पैटर्न था वो सिर्फ women जेंडर के ऊपर नहीं था। कोई भी इंसान, कोई भी मर्द जो कोट एंड कोट उनके मर्द के डेफिनेशन के दायरे में नहीं आते थे, उनके अगेंस्ट था। Patriarchy was against a man doing his own household chores. So a man who I'll tell about myself. I am a person who loves doing his personal chores. और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, rather I love doing it. मुझे खाना बनाना बहुत पसंद है। I like doing my dishes if I get free time. So ये तो फिर मतलब मेरे मॉडल्स के अगेंस्ट चला जा रहा है, मेरे लाइकिंग्स के अगेंस्ट चला जा रहा है। So the men who are oppressed is also because of patriarchy. ऐसे बहुत women मैंने देखे, औरत मैंने देखे, who don't want their daughters to go ahead in life and they just want them to get married. Exactly. So patriarchy बोल ले, feminism बोल ले, they don't stick to a particular gender. If you try to find the major feminists, कि I am not talking about feminists on paper, मतलब जिनके लिए मतलब ये वाला तो बहुत ही बेतुकी बात है कि एक मर्द सिगरेट पी रहा है तो एक औरत भी सिगरेट पिएगा। अरे भाई दोनों गलत है। हाँ भाई, सिगरेट पीना ही गलत है, दोनों गलत है, सिगरेट पीना ही गलत है। अच्छा हम लोगों ने नहीं अगर करना वो चाहिए। ये मोटो ऑफ फेमिनिज्म नहीं होना चाहिए। फेमिनिज्म का जो कोर मोटो था इक्वल अपॉर्चुनिटीज, क्यों नहीं होगा, वो सही मोटो है। तो इफ यू सी द रेवोल्यूशंस दैट केम इन फेमिनिज्म, you will almost, if you throw your hand around and pick up names, you will get all the male names, like men. राजा राममोहन रॉय, जिसने सती बंद किया था,
ईश्वर चंद्र विद्यासागर जितने हाँ, जिसने विडोडी मैरिज स्टार्ट किया था, एग्जैक्ट। all the names are of males. हम्म। Okay, moving on. Uh, Yeah. so this is something we have already discussed, but let's focus on this. But yeah, sure. Okay. So, like we know that method acting has been brought to the scenario of this world through Moscow Art Theater and starting off with Stanislavski, which he later disapproved his own theory. And it was brought by Richard Bolsonski and one more, I don't remember the person. They came to New York and Union Square, Hmm. and I guess it was Actor Studio, where Lee Strasberg was also a part of it. And then after that, they started off with Lee Strasberg establishing his own Lee Strasberg Theatre and Film Institute, which I was also a part of once. And yeah, from there it started off with method acting. What would have happened exactly if this method acting, Hmm. this wave of method acting was brought to the Indian film industry? Like this is a very like a basic question or something. But what would have happened, and what turnovers and what turmoils and what kind of films would we have seen when it came down to this, like this, and what kind of acting would we have seen, or the people, like for example, like after Lee No, Strasberg, like you're like from Lee Strasberg, we saw like along with Lee Strasberg in Actor Studio, we saw Stella Adler, we saw Michael Chekhov, and there were many more, Hmm. like all these people. So they also came up with a bunch of theories and bunch of techniques and things and all. So Yes, yes. this would this have what impact would have had in India if this wave would have brought to नहीं, India? मतलब like no, is this wave would have brought to India, like if it wouldn't have gone to US and it would have started in India? That's the Yes, question. that's the question. पहली बात तो है कि ये प्रेडिक्ट करना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि देख ये ना मतलब आर्ट कला ना सरकार जैसा होता है जो कुछ भी कर सकती है, यू कैन डू एनीथिंग. Hmm. तो क्या हो सकता था ये प्रेडिक्ट करना बहुत डिफिकल्ट है. मेरे हिसाब से इट वुड हैव बीन समथिंग गुड ओनली, क्योंकि इसका इम्पैक्ट हम लोग यूएस में जो देख रहे हैं और जिसका फ्रूट आज भी यूएस खा रहा है, Uh-huh. इट केम आउट गुड. तो Hmm. और एंड आई बिलीव इंडियंस हैव प्रोड्यूस्ड एनोरमस आर्टिस्ट्स. Yes, मैंने exactly. जितना वेस्टर्न वेस्टर्न लिटरेचर बोल ले, वेस्टर्न सिनेमा बोल ले, जितना पढ़ाई किया है, और मैंने जितना इंडियन कल्चर इंडियन लिटरेचर पढ़ाई किया है, आई लिटरली मतलब आई कैन, मतलब मुझे ये बोलने में कोई दिक्कत नहीं है, आई कैन आई बोस्ट अबाउट इट दैट रविंद्रनाथ ठाकुर से बड़ा अ पर्सन इन लिटरेचर, आई डोंट नो वेदर समवन वाज बोर्न विद दैट कैपेबिलिटी ऑफ वास्टनेस. Yes. एंड इफ यू डोंट नो, आई टेल यू, रविंद्रनाथ ठाकुर लिटरली लोग ऐसे घर घर में फोटो रख के माला देते हैं एज इफ ही इज गॉड, एंड Yes. दिस इज ट्रू. सो रविंद्रनाथ ठाकुर से बड़ा आर्टिस्ट इन द फॉर्म ऑफ लिटरेचर, Mm-hmm. कोई इंसान अगर उसके आसपास भटकता है इन लिटरेचर, दैट इज ओनली विलियम शेक्सपियर. उसके आसपास बाकी बाकी दुनिया में मुझे नहीं लगता है कोई आसपास भी आने का मतलब बेसिक कैपेबिलिटी भी रखता है. एंड हाँ. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट, आई एम इंक्लूडिंग ग्रेट्स. Hmm. You know what's good with Rabindranath Tagore? His vastness, his versatility. Hmm. That is very, very difficult to reach. Very difficult to reach. Extremely difficult to reach. तो अगर वो आया होता, ये मूवमेंट इंडिया में आया होता, इट वुड हैव गिवन बर्थ टू समथिंग अमेजिंग. आई एम 100% श्योर ऑफ इट. लेकिन आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट कि ये नहीं आया. आई टेल यू द रीजन. आई टेल यू, हाँ. इंडिया ने ना बहुत सारे चीजों की शुरुआत की है, बहुत सारे, Hmm. starting from mathematics, science innovations, a lot of things, surgery, and now you see हर चीज में वेस्ट आ गया है हम लोगों से. Hmm. In those specific things, those are being started by us. Yes. So the problem with India has always been we can start one thing but we cannot maintain it. Yes. We cannot keep going. We cannot now we couldn't keep the boat floating. Yes. ये Yes. डूब ही जाता है नहीं यार. Yes. ये बड़ी दिक्कत की बात है हम लोगों की.
अगर वो वाला चीज इसमें भी फॉलो हो जाता ना, इट्स बेटर ऑफ इट डिड नॉट कम हियर. Yes. Yeah, I completely agreed that, yeah, Rabindranath Tagore and William Shakespeare, that comparison was fabulous. And plus, yes, this, yes, somewhere down the line, even I agree to the fact that अच्छा हुआ कि ये theory यहाँ पे नहीं आई. क्योंकि हमारी जो नहीं आया. इंडियन इंडस्ट्री जिस तरीके से इवॉल्व हुई है यार, मतलब तुम हर एक स्टेज पे देखो, मतलब हर एक स्टेज पे हमने फैबुलस फिल्म्स दी है, हमने हर एक स्टेज पे एक अलग ऑडियंस, क्योंकि बेसिकली इंडियन सोसाइटी हैज इवॉल्व विद द फिल्म्स. तो हम लोगों का इवोल्यूशन राइट. इतना ब्यूटीफुली हुआ है फिल्म्स के साथ. लाइक तुम अगर देखो तो एक पुराने जमाने में जाओ तो हमेशा एक फादर रहता था जो अपने बेटी को बाहर नहीं निकलने देता था. ठीक है. सही नाउ, बात है. ठीक है, तो थोड़ा एक प्रोग्रेस आया है. ठीक है. देन वी केम टू द टाइम व्हेन शाहरुख खान केम, एंड वी हैड दिस मैन राइट. लाइक दिस, ये बाहों में फैला के आता था, ये था हीरो. फिर उसके हाँ, बाद बिल्कुल. द फ्लैम्बॉयंट रोमांटिक बॉय. बॉयड रोमांटिक बॉय, देन केम डाउन. बट यहाँ पे ऑडियंस सिर्फ शाहरुख खान इज अ शाहरुख मिथ. खान इज लाइक ही इज अ गॉड मैन. लाइक, ही इज अ मिथ, मतलब. या. एंड शाहरुख खान के साथ साथ यहाँ पे लोगों ने लाइक एक सलमान खान को भी पसंद किए. लाइक मुझे भी पर्सनली सलमान खान बहुत पसंद आते हैं. हम्म. लाइक ड्यू टू द फैक्ट, लाइक first of all his business mindset, the way he markets himself, the way he राइट. portrays himself in the films. So it's, ठीक है, तुम इसको क्रिटिक्स इसको कुछ भी बोले, क्रिटिसाइज करने हेटर्स इसको कुछ भी बोले कि यार ये एक तरीके से क्या बोलते हैं कि ये अपने आप को आइडियलाइज करते हैं ये लोग, ऐसा. भाई इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का वो एसेंस है कि इन्होंने ये कल्चर लाया है हमारे पास और हम लोगों को इस तरीके से मोल्ड किया है. एंड आई एम वेरी मच थैंकफुल टू ऑल द इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स एंड एवरीवन कि एब्सोल्युटली. यस, बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं. यस. सो भाई एक बात तो सही है ना कि आ, सलमान खान बोल ले, शाहरुख खान बोल ले, उनके जन्मदिन पे बाहर लाखों लोग खड़े होते. भाई कुछ तो मैजिक है. यस. हाउ कैन आई डिनाई ऑन इट? कोई हाँ. सवाल ही नहीं होता है. कुछ तो किए हैं. अरे मैं तुम्हें एक पर्सनल ये बताता हूँ एक्सपीरियंस. एक था हेटर, ठीक है, मैं बोलूंगा नहीं उसका नाम. ठीक है. यू प्रोबेबली नो. ठीक है. हेटर था, वन ऑफ द एक्टर्स, एक्टर्स का भी नाम नहीं लूंगा, बड़े ही एक्टर था अपने कंट्री के. हाँ. ठीक है. मैं लेकर गया उसको जबरदस्ती फिल्म दिखाने गई. ठीक है. उसने ताली बजाई जबकि वो फिल्म इतनी हिट भी नहीं हुई. उसने ताली बजाई. फैक्ट है. नहीं गिरे. You get it? So, my next हाँ, question तो is सवाल पे based आते on हैं. हाँ, टिल द next क्वेश्चन. question is based on this, and you'll like it. See, our film industry हम्म. has gone through the transitions. Yeah, like राइट. like हम्म. recent transition. अगर मैं खुद अगर उसको स्केल करना चाहूंगा तो recent two transitions में बोलना चाहूंगा. One was गैंग्स ऑफ वसेपुर, जहां पे गैंग्स ऑफ वसेपुर, ब्लैक फ्राइडे, when the order अपना अनुराग कश्यप came in. Yeah, like his way of portraying राइट. films, his way of language, his way of uh, basically his the way of हम्म. writing scripts and dialogues. Anurag Kashyap came in, and similarly Sandeep Wanga Reddy came in, where he has portrayed a very हम्म. back in the toxic man like Kabir Singh, Animal, Arjun Reddy. इसके यहाँ से जब वो राइट. बाहर, एंड तो अभी अगर नेक्स्ट जेन देखा जाए तो आज के डेट में हम लोग बहुत ज्यादा एक्शन पे फोकस कर रहे हैं. मर्डर मिस्ट्री एक बहुत रियलिस्टिक, ओटीटी भी अगर कंसिडर करे इसको रियल में लेकर आए, तो व्हाट डू यू हम्म. थिंक दैट would be the next evolution and the next type of film that हम्म. will bring in and bring up and revolutionize the current scenario of our film industry? एक्चुअली अनुराग कश्यप का जो एरा था, जब से ही केम इन, ब्लैक फ्राइडे हो गया, गैंग ऑफ वासेपुर हो गया, उस वहां से संदीप रेड्डी वांगा का जो एनिमल अभी रिलीज हुआ है, यू नो, इसमें भी ना, इसके अंदर देख, बिटवीन दीज टू पॉइंट्स बहुत सारे ट्रांजिशंस हुए. बहुत. देयर वाज एन एरा जहां पे आयुष्मान खुराना काइंड ऑफ फिल्म्स Yes, वर इन द हिट लिस्ट. exactly, exactly. कि मतलब
choosing brave contents. For a hero, choosing a gay character in a place like India was a heck of a choice by Ayushmann Khurrana. And Ayushmann Khurrana has always chose amazing contents, yes, amazing definitely. scripts. So Like there बहुत were कम a लोगों lot में of आई गेस, बहुत कम लोगों में लाइक वो what I mean to रहेगा say is, हाँ जिगरा लेने का कि like first of all he has done that Shubh Mangal Zyada Savdhan about and हाँ right right then Shubh Mangal Savdhan like about हाँ like I remember one of his films, it was about erectile dysfunction. Like that is one of the topics very few people focus on. Yeah. yes. And I'll tell you something about Chandigarh the Ashiki mein, when the confrontation scene came with the female actor with Ayushmann Khurrana, Vani Kapoor was there. He got to know that she is a trans woman, and the way he said repeated times, "Manu munde dinal sex kar li." For a hero to vouch on that statement repeated times in a place like India, I'm like, oh my god, what is this man doing? अरे उसको मतलब उसको ना फर्क ही नहीं पड़ता है, मतलब क्या ही मीम बनेगा, अच्छा बनने दो. लेकिन माय पॉइंट इज, वो जो भी स्क्रिप्ट लेता है ना, आई वोंट से दैट आयुष्मान खुराना के जो फिल्म्स होते हैं दे आर एक्सट्रीमली वेल मेड. आर्टिकल 15 को छोड़ के ऑल आर वेरी एवरेजली मेड. दे आर स्टैंडर्ड, मतलब देयर टेक्निकल स्टैंडर्ड्स आर क्वाइट गुड. मतलब बट दैट्स नॉट ब्रिलियंट. आर्टिकल 15 इज ब्रिलियंट. मतलब Brilliant. उसको ले, आर्टिकल 15 को लेकर मैं 1 घंटा बात कर सकता हूँ. आई लाइक दैट फिल्म सो मच. और इस मैंने दिन कई बात बार, मतलब 7-8 बार देखा है आर्टिकल 15 इन टोटल. मुझे बहुत पसंद है. आई लव अनुभव, दैट डायरेक्टर अनुभव सिन्हा एज अ डायरेक्टर. ही इज अ ग्रेट डायरेक्टर. तो सो आयुष्मान खुराना का वो पार्ट हो गया. बट सी द चॉइस ऑफ फिल्म्स, इवन नॉट ओनली इन डायरेक्टर्स, द एक्टर्स आर बीइंग पार्ट ऑफ. हमारे यहाँ पे ये स्टार कॉन्सेप्ट ऐसा चलता है ना कि द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोड्यूसर टेलिंग कौन से स्टार को साइन किया हो, एंड एवरी स्टार सेइंग कौन से प्रोड्यूसर को साइन किया हो. ये अलग ही लूप चलता है डायरेक्टर्स का. मतलब प्रोड्यूसर डायरेक्टर से पूछ रहा है कि मैं इतना पैसा लगाऊंगा, आप ये पैसे वापस कैसे करोगे. अभी डायरेक्टर सेल्समैन थोड़ी है, वो हाँ कैसे मतलब वापस करेगा पैसा. दैट्स नॉट हिज जॉब. इट्स योर जॉब एज अ प्रोड्यूसर टू मार्केट द फिल्म एंड टेक द मनी बैक. तो यहाँ पे फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट भी बहुत चलता है कि मैं पैसे दूंगा एंड यू मेक द फिल्म एंड यू ब्रिंग बैक द मनी. सो ये एक्टर्स के लिए भी बहुत ही बढ़िया ट्रांजिशन है कि ऐसे स्क्रिप्ट्स पे भी एक्टर्स काम करना चाह रहे हैं. एंड यू विल सी अ ग्रेट ट्रांजिशन विद द ग्रेट ट्रांजिशन ऑफ स्टोरी टेलिंग दैट अनुराग कश्यप गॉट. एक्टर्स लाइक पंकज त्रिपाठी, जयदीप अहलावत, के मेनन, all of them are coming. मतलब hounds of great actors, they are getting jobs. जिनको पहले क्या होता था, ठीक है एक साइड रोल में ले लो, एक कैरेक्टर एक्टर में ले लो. कैन यू इमेजिन लूजिंग एन इरफान खान और लूजिंग अ मनोज बाजपेयी, पंकज अरे त्रिपाठी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, ऑल देयर लाइफ इन साइड एक्टिंग. कोट एंड कोट, ये कैरेक्टर एक्टर शब्द से ही मुझे बहुत पड़ता है. एक्टर एक्टर होता है हमारी इंडस्ट्री में बहुत चलता है ये कैरेक्टर एक्टर. तो मतलब वो सेकंड लीड, थर्ड लीड, मास में खड़ा कर देना एक छोटा सा विलन. वहां पे कैन यू इमेजिन मनोज बाजपेयी, के मेनन वेस्टिंग देयर प्रोडक्टिव क्वालिटी ओवर देयर. So I will thank directors like Anurag Kashyap, Anubhav Sinha, all of them to bring back these actors. Tigmanshu Dhulia. So transition हर जगह हुआ है. Coming to the main question कि अगर आज ये ट्रांजिशन होगा तो कौन सी बेसिस पे होगा, ये ना बोलना बहुत मुश्किल है. क्योंकि बिकॉज जो ट्रांजिशन ओवर द इयर्स इंडियन फिल्म्स में हो रहा है ना, दैट्स वेरी अनप्रेडिक्टेबल. यस. मतलब तुम अनुराग कश्यप के वो वाले फिल्म्स के बाद जो दे आर वेरी, मतलब ब्लैक फ्राइडे तो इफ आई एम नॉट वेरी रॉन्ग रिलीज भी नहीं हुआ था सेंसर बोर्ड के ऑब्जेक्शन की वजह से. इट वाज सो रॉ. तो रॉ नहीं, मतलब द डेटास वर आई गेस नॉट वेरी सूटेबल फॉर द सेंसर बोर्ड टू पास. तो हम लोग बाद में यूट्यूब में देखे एंड वी लव्ड इट. सो अनुराग कश्यप के वो रॉ स्टोरी टेलिंग के बाद इमेजिन अ स्टोरी टेलिंग लाइक चंडीगढ़ दी आशिकी, लाइक दम लगा के हैशा, एंड देन अगेन समथिंग लाइक एनिमल. और उधर एंड बाकी जो रीजनल इंडस्ट्रीज हैं, फिर तो अगेन ये रीजनल इंडस्ट्री शब्द से भी मुझे बहुत नफरत है. मतलब कोई भी फिल्म इंडस्ट्री होता है, मतलब हिंदी भी तो रीजनल वर्ड ही हो गया. फिर हम लोग ऑडियंस बेस के ऊपर बात करते हैं रीजनल इंडस्ट्री इंडियन वगैरह. फिल्म तो हाँ, इंडस्ट्री है, तो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री. इंडियन फिल्म इंडस्ट्री तो बाकी अलग रीजन्स में जो फिल्में बन रही है वो भी कमाल के काम कर रहे हैं. आई लव मलयालम फिल्म्स. आई एब्सोल्युटली लव मलयालम फिल्म्स.
There's a film called Hridayam in Malayalam. I went crazy. It's inside my all-time top tens. It's an out and out love story. It's a uh, kind of melodrama and kind of वो soft boy romance वाला एरा को लेके है. But I absolutely love the storytelling. So पूरे इंडिया में, पूरे भारत में जिस तरीके का ट्रांजिशन हर जगह हो रहा है, अलग अलग हो रहा है, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से कि कौन सा ट्रांजिशन आगे लेके जाएगा. और ऐसा भी है कि ये जो आगे ले जाने वाला पार्ट है ना, ये ट्रांजिशंस बहुत दिन तक नहीं रहते. मतलब 1-1.5 साल 2 साल होगा, कोई और ट्रांजिशन आ जाएगा. और अभी तो ये टाइम स्पेन और भी कम हो गया है क्योंकि ओटीटी आ गया है. सो अ होल लॉट मोर प्रोजेक्ट्स आर बीइंग मेड. OTT is kind of a blessing and a threat to the theaters. Blessing cinema के लिए है, threat theaters के लिए है. So OTT has increased the number of works for technicians, for actors, and we are getting to see amazing actors without the threat from the that the producers always have कि पैसा कैसे वापस आएगा. मैं प्रोड्यूसर होता है, ये चिंता मुझे भी होता है. Now Netflix is buying the whole project. Now Amazon Prime is buying the whole, Prime Videos is buying the whole project. C5 is buying the whole project. So you don't really have to think a lot about casts. तो ये भी एक तरीके का सिनेमा का ट्रांजिशन है जो ओटीटी ने लाया है. तो यू कैन एक्चुअली कॉल द मीडियम ऑफ ओटीटी एज अ ट्रांजिशन. और तू एंड यू सी कि ये ओटीटी आने के साथ साथ पूरा स्टोरी टेलिंग ऑफ द सीरीज हैज चेंज्ड. वी आर गेटिंग टू सी रियलिस्टिक वर्क्स, मोर ग्राउंडेड, जो रास्ते गली नुक्कड़ में होते हैं. द कन्वर्सेशन दैट हैपेंस ऑन टी स्टॉल्स, रियल टी स्टॉल्स, हम लोग वो देख रहे हैं. सो कौन सा ट्रांजिशन इसके बाद आएगा ये बोलना इसलिए डिफिकल्ट है क्योंकि मुझे ये नहीं पता है कि कौन सा टेक्नोलॉजी आगे आएगा. Okay. तो मतलब कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. इट्स डिसरप्टिव. हाँ, मतलब एनिमल, आई पर्सनली, मतलब एनिमल को भी लेके द वे यू टुक द नेम ऑफ एनिमल, आई हैव मिक्स्ड व्यूज ऑन एनिमल. It's amazing craft. Animal is amazing craft. The director broke all the grammars of cinema. मतलब क्या ही क्या है. मतलब हीरो विलन को मार रहा है और वहां पे पंजाबी फोक गाना गा रहे हैं उनके साइड हीरोज, जो साइड किक्स थे सारे, वो सारे पंजाबी फोक गाने गा रहे हैं. भाई क्या ही अलग सीन बना दिया है. अगेन, बट आई डोंट रिलेट टू दैट वेरी काइंड ऑफ स्टोरी टेलिंग. वो होता है ना कि okay, it was an entertainment and I will not take those values in my real life because I'm sensible enough to know, but a lot of people, they get motivated with cinema. So कुछ चीजें याद रखना होता है मेकर्स को, because cinema is a mass medium and we are a lot of times we are very responsible what we are showing, and in a place like India, not to mention. So I have mixed views about Animal. I don't have a staunch view about Animal of good and bad. But yeah, it's amazing making. इसमें कोई शक नहीं है. Brilliant music. Okay. Great cinematography. So yeah, with this, we are going to end the miscellaneous questions. Like I would like to add that key fact कि इंडियन सिनेमा में अगर ट्रांजिशन, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आता है तो ये ओटीटी के कारण डेफिनेटली आएगा. बट आई गेस देख, ये देखो, आ चुका है समर्पित. ऑलरेडी इट स्टार्टेड. इट हैज स्टार्टेड. बट इफ यू कंसिडर द फैक्ट कि आजकल लोगों का जो अटेंशन स्पैन है ना यार, ये कम हो गया है. ये मैं पता नहीं, ये फ्यूचरिस्टिक प्रेडिक्शन लगा रहा हूँ कि शायद से ये जो शॉर्ट अटेंशन स्पैन जो आया है लोगों का, ये एक इफेक्ट करेगा अगर हमारी इंडस्ट्री पे, तो दैट विल बी एन इशू. बट एट द सेम टाइम आर इंडस्ट्री, आर फिल्म इंडस्ट्री, जो कि एक ऐसी इंडस्ट्री है जो इंसान को 3 घंटे तक बैठा के रख सकती है एक चेयर पे बिना हिले डुले, और सिर्फ उसके क्या बोलते हैं सेंटिमेंट्स बाहर आ रहे हैं. तो ये अगर अटेंशन स्पैन को कोई करेक्ट भी कर सकता है तो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री है. और अटेंशन स्पैन एक ऐसी चीज है जो इंडियन इंडस्ट्री के ऊपर इम्पैक्ट कर सकता है.
So this is a very like बिल्कुल कर सकता है. they have a very ironic as well as contradicting relationship towards each other. This attention span and film That, industry. that is what I'm telling. It's the changes we have in our industry are very much related to the technologies we are having. Yes. कोई भी तरीके का. पहले फिल्म नेगेटिव्स में फिल्में बनते थे, अभी फिर डिजिटल आ गया. The pattern of filmmaking changed. like the visuals have changed over time. Cinematographers have different opinions about films and digital. Similarly, I also have my own opinion about it. Like सबको होते हैं, and things are always changing according to it. आज OTT है, कल कुछ और आ जाएगा. Exactly. So yeah, guys. So this video ends over here. Watch out for the next video, and there we are going to talk about like basically this is a this or that relationship between two things, or then we have a specific round of rapid fire. I don't have a humper like Karan Johar right now, but I'm definitely gonna give a salute to So, our friend over here, that is Subharthi Mukherjee. Stay tuned. Thank you. yeah.